Hello guys.
Another meaningless day. Transfers of supplies must be reported. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Let's light it up! Freeze! This doesn't look good. Off we go! Adventure time! Go, Barbara, go! Oh, hi. Everybody stand back! Cool it! Dodge this! Cool it! Freeze! Don't get frostbite! तब मैं छोड़ के गया था। तो कोई भी बना के थोड़ी छोड़ के जाएगा, कुछ होगा तो Freeze!
Dodge this. Freeze. किसी को भी काले छोड़ेगा हम लोग भी मिलेंगे तो छोड़ेंगे Teamwork is dreamwork. यहाँ छोड़ के तो कहीं नहीं जाने वाला है This moment will be frozen in time. ये भी है What's the hurry? Here come the fireworks. That's gonna hurt in the morning. I always bounce back. Just watch me. Let's light it up. Why do they never miss? Dodge this. Cool it. Dodge this. Don't push your luck. I'm not done. Light it up. Going in. This is just my luck.
Let the as everyone start singing. ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। You need help? Yes, yes, Vortex, help तो चाहिए। आ जाओ। हो भाई ऑनलाइन ही बैठा था, सही है। वापस स्टार्ट करना होगा वो सब। Behold! Too slow. Squall Fury. Quit following me. Too slow. Quit following me. Too slow. That's far enough. Illusion shattered. Stabilize. The wind rises. Everybody stand back! Bow your head. मेरा डेविल मुझे भी लिख डिलीट ही कर दिया है, पता नहीं चला। There is no escape! How amusing. भाई मजा आ गया, कंप्लीट हो गया।
मुझे इसे मारने में हेल्प कर दो। Boss fight. Yes. खत्म कर दिया। We go! Illusion shine it up! चलो सही। The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. आ जाओ इसे मारते हैं। Adventure time. We go! Teamwork is teamwork! Torn to oblivion! Let's light it up! Adventure time! I will have order! Shine down! I'm going in! Let's light it up! Illusion shattered! Let's light it up! Off we go! Everybody stand back! We go! Let's light it up! Yeah. Off we go! Going in!
Illusion shattered! Everybody stand back! ओ भाई काफी लंबा फाइट चल गया ये तो अपना। अब इसके बाद किसको मारा जाए? No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! Too slow. Squall and Fury. You want to use my hat as an umbrella? Huh. The audacity to even make that request. An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. The power of water is its ability to take any shape. Shine down! Now you shall perish! Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. The power of water is its ability to take any shape. Wretched vermin! Squall and Fury! One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Illusion shattered! Let's light it up! Step aside. Let's see what happens when you lose your foothold. Stabilize! Off we go! Adventure! The power of water is its ability to take any shape. There is no escape! Adventure time! Squall and Fury! We seek but a small haven of tranquil waters. Is that so much to ask for? As long एक भी 5 स्टार आर्टिफैक्ट नहीं निकल रहा। forever. 40 बचा है। एक और किसी को मार सकते हैं तो चलो इसको मारते हैं। इसको एक बार भी नहीं मारे हैं आज तक। 45 हाँ। The wind rises. Level you needed. अच्छा। Quit following me.
इसको मारने के लिए। मेरा कितना है अभी? 42 है। 42। Law of the jungle. Upon the gale. Behold. गोल्डन आर्टिफैक्ट। अरे नहीं, जानते हो कल ही खेल रहा था शायद, परसों। हाँ परसों में खेल रहा था ना भाई, एक बार में 3 निकल रहा था। 2 बार निकला 1-1। वुल्फ को मैंने मारा तो सीधे 3 गोल्डन आर्टिफैक्ट निकला। सोचो Wind rises. आज एक भी नहीं निकल रहा। अरे ये कहाँ पे है बॉस? बॉस है कहाँ पे भाई? ये पॉइंट अनलॉक कर लो। Too slow. यहीं पर तो दिखा रहा है लेकिन है नहीं। लगता है इन लोगों को पहले मारना पड़ेगा शायद, तभी कुछ होगा। इन लोगों को मारना ही होगा। Behold. Unsightly insects. अंडरग्राउंड में भी, हाँ अंडरग्राउंड ही होगा। पहले इन लोगों को मार देंगे ना, तब शायद उन लोगों को पता लग रहा है। अंडरग्राउंड कहीं पे छिपा हुआ है। Quit following me. मिलना है। Squall and fury. How amusing. इधर पे क्या अटैक कर रहा है कुछ? ये सब कलेक्ट कर लो, फिर देखते हैं क्या क्या है। इसको तो उड़ाना है, इसको भी उड़ाना है। लड़का हो गया डिस्ट्रॉय। इसको करना है। Everybody stand back! Let's light it up! चलो ये तो खुल गया। I call treasure! इधर भी बहुत कुछ गिरा हुआ है, लेकिन ये अंडरग्राउंड जाने का रास्ता ही नहीं है यार। कहीं इसको भी खत्म कर दिया अब क्या?
Swan Fury. You need find. अरे यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है, इसमें यहाँ से जाने का है क्या? नहीं, यहाँ से जाने का नहीं है। The wind rises. एक मारना था यार, ये मजा आता है इसको मारने में। अंडरग्राउंड जाए कहाँ से, अब ये समझ नहीं आ रहा। Too slow. ये इधर पानी पानी है। Quit following me. इधर से, हाँ इधर से रास्ता है, हाँ सही है। अच्छा अच्छा, इधर ही से तो ऊपर आए थे, लेकिन इधर से नीचे जाने का रास्ता किधर से है? यहाँ से होगा शायद। ये देखो, हाँ यहीं से है। इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। आ जाओ, मिल गया। ओ भाई मिल गया। इधर से है रास्ता। देखे कुछ ना कुछ करके भाई खोज ही लेते हैं। वीट मिल रहा है, कैबेज वैबेज मिल रहा है। चलो इधर अंदर। जितना भी चमकड़ा सब ले लो, काम ही है। आ जा ब्रो, यहाँ पे मैटर करो, लोगों को मारो, इन लोगों को मारो, फिर आगे चलते हैं। Swan Fury. Teamwork is dreamwork. Inazuma shines eternal. Let's light it up. पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है सब उठा लो। काफी कुछ मिल गया। Even better than I imagined. It's my lucky day. White iron chunk। ऊपर में भी मिल। आ जाओ इधर अब। छोटा मोटा लोगों छोड़ो, बड़ा बड़ा लोगों मारते हैं। Everybody stand back. Unsightly insects. The wind rises.
Illusion shattered. Take it and have fun. सही है। छोटा मोटा केकड़ा सवाल है। ओके, दो रास्ता है, एक इधर जा रहे हैं। चक। Adventure time. एक इधर आ रहा है। अच्छा, इधर आने के लिए इन लोगों को मारना होगा। Behold! काफी रॉ मीट मिल गया, काम आएगा आगे। You even want this? अच्छा, यहाँ पर तो रोड एंड हो गया। Squall and fury. यहाँ पर भी रोड एंड हो गया। अब क्या? यहाँ पे क्या करना है? अच्छा, इधर जाना है, ठीक है। इधर जाना है। ये क्या है? Crumble! Off we go. Behold! Illusion shattered. Too slow. ओ भाई चलो, सही जा रहे हैं कम से कम। केकड़ा वेकड़ा को छोड़ो रास्ते में, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। केकड़ा दिमाग खा गया। ये देखो केकड़ा। अरे ये तो बाहर निकल आए। ये तो कुछ इधर मिला नहीं। ये तो बाहर ही निकला है यार। ये क्या बात हुआ? इधर भी कुछ है क्या? The wind rises. अच्छा अच्छा अच्छा, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। आ जाओ, जो आ जाओ। Off we go. Squall and fury. Upon the gale. Too slow. इधर भी डेड एंड ही है यार, कुछ नहीं है। उस तक जाए तो जाए कैसे भाई? Wretched vermin. Now you shall perish. Shine down.
You even want this? इधर भी तो कुछ भी नहीं है। उस तक जाने का रास्ता है या नहीं है, ये क्या बात हुआ? Quit following me. The wind rises. ये क्या बात हुआ? कुछ है ही नहीं। क्वेस्ट होगा। बॉस के लिए क्वेस्ट तो नहीं हुआ है कभी आज तक, अभी जितना खेले हैं हम। ये सब बॉस के लिए कहाँ कोई क्वेस्ट हुआ है। ये हिडन नहीं होगा कहीं पे। इतना करने के बाद भी मिल नहीं रहा। अच्छा, यहाँ ऊपर में का रास्ता ये किधर निकल रहा है? Squall Fury. अच्छा, ये कहीं नहीं निकल रहा है, ऐसे ही है। ऐसे ही है ये। इसको तो आज मार कर ही कहना है भाई। इट्स डेड ना। चलो, जहाँ से हम लोग निकलने का दिखाया था रास्ता, उधर जाकर देखते हैं फिर। कोई और भी होगा। हाँ, इसको मारने का मन कर रहा है यार, आज तक एक बार भी नहीं मारे हैं। ये देखो, घूम फिर कर हम लोग इधर ही निकले। मैं बोल रहा है उधर। एक बार चले जाएंगे। ये तो हम लोग यहीं आ गए और यही दिखा भी रहा है मैप में भी। अगर हम लोग देखें, खुल जा मैप। ये पानी से थोड़ा सा आगे जा कर के यहाँ कहीं भी, तो हम लोग एक बार यहाँ आकर ट्राई करते हैं। एक बार है ना, इधर ऐसा लग रहा है कि वहीं से ट्राई किए थे पहले, तो ये मिला था। हाँ, वहीं से तो किए थे। कम हेयर। अच्छा, यहाँ पर चलो। टीपी कर दी। फॉलो मी। ओके, अच्छा। हाँ, सही है, सही है, सही है। मिल गया, मिल गया। सही है, यही है, यही है भाई, यही भी है।
ये देखो ये इतना ग्रीन ग्रीन हो रहा है, समझ जा। देखो मिल ही गया भाई फाइनली। हाँ परेशान हो गए थे, बताओ टीपी तक आया था मैं, आगे इधर नहीं आया था। कहाँ कोना वोना खोज लिया, मेन जहाँ आना था भाई वही नहीं। Going in! Let's light it up! There is no escape! Adventure time! Get out of here! Take cover! Adventure time! बूढ़ा बनी क्या बोल रहा है? Why do they never miss? अरे बोना बंदे की क्या कर रहे हो? Everybody stand back! Let's हाँ light it up! क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा। बूढ़ा बनी भाई बोना डेंड्रो के क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, इसको बस मार के मटेरियल कलेक्ट करेंगे और क्या। Off we go! भाई आधा ज़्यादा कर लिया दोनों बिना डेंड्रो लिए यहाँ। अच्छा 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 अच्छा, तो डेंड्रो से मारना पड़ता है, ऐसे नहीं मरता है। ओह, ये तो पमता नहीं था, ये तो पमता नहीं था। हम लोग तो आ गए भाई ऐसे बूम बूम करने। अरे अनिकेत भाई मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग। The wind rises. अरे 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 मार दिया भाई, मार दिया। Adventure time! Get out of here! डंडा कैरेक्टर के बिना इसको नहीं मार सकते। ऐसा क्या? ले अभी इसका पूरा हेल्थ कम हुआ था, ये बिना डंडों का कब से मरने लगा। अरे नहीं पूरा मतलब हेल्थ इसका पूरा ऐसा खत्म हो गया था, पूरा खत्म नहीं था, पूरा हेल्थ बढ़ा दिया। ये देखो यहीं पे ये हेल्थ बढ़ा दिया फिर। मैं आऊँ क्या डंडो ले? आओ 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 जल्दी से आओ। डंडो कैरेक्टर पर सिलेक्टर कैरेक्टर के बिना नहीं हराया जा सकता है, हेल्थ बढ़ता रहेगा। ये आता ऑन करके आओ आओ फटाफट आओ, तब तक इसका हेल्थ हम लोग कम करते हैं। देख रहे हो तू सा होता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये इसको हम लोग काट नहीं पा रहे। जहर जिंदा रहने का ट्राई करो तब तक डैंड्रो कैरेक्टर ना आ जाए। इसने मुझे बहुत मारा। अच्छा अरे मर गया, अरे ख़त्म हो गया। अरे बिना डैंड्रो कैरेक्टर के ख़त्म हो गया भाई, कलेक्ट भी हो गया सब कुछ। ओ भाई ओपी वॉर्टेक्स ओपी भाई। ये लैग कर रहा है, इसको क्या हो गया? आ दिया भाई यार ओपी। वो चिंगारी लाया।
नेट गया जिया भाई साहब, तुम कलेक्ट भी नहीं कर पाए भाई, इतना मतलब मेहनत से ये किए हम लोग और तुम कलेक्ट भी नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं। Benny's adventure team, assemble! यहाँ पे कोई सिटी है क्या? Or not. I don't need bro. Miracle. I don't need it. अबे ये नहीं। Spawn Fury. Behold! Upon the gale. मेरे को एक क्रिस्टल दोगे? 160 रीजन है। क्रिस्टल क्या होता है? किक मई। अच्छा, बाउंटीज कहीं भी एक ही कर सकते हैं क्या? कोई भी शहर का एक ही कर सकते हैं बाउंटी? ओ भाई, इसको करने से है। अच्छा, कंडेंस रीजन इसी को करने से हो, इसी को करने से कंडेंस रीजन का ये मिलेगा, तो बना के रखेंगे। Too slow. जिनसन क्लस्टर, यस। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे मुझे जानते ये बैटल पास लेने का मन कर रहा, लेकिन 7 घंटे में तो ख़त्म भी हो जाएगा। 38 तक हो गया था, काफ़ी कुछ मिल जाता। 38 तक तो काफ़ी कुछ है ही। किधर गया 38? यहाँ तक ही देखो, इतनी सारी चीज़ें मिल जाती। इन सब में रहते क्या? पता नहीं क्या क्या ही मिलता है इसमें। एक वीक में 3 बाउंटीज कर सकते हैं बस, या तो किसी भी रीजन के एक। अच्छा, ये देखो इधर पावर यूज कर रहा है ये अपना। चलो वर्ल्ड क्वेस्ट, ये वर्ल्ड क्वेस्ट क्या है, इसी को कंप्लीट कर दो पहले, कमीशन ही। चलो मैं इस वाले कमीशन में जाता हूँ, तुम किसी दूसरे वाले कमीशन पे जाओ, फटाफट कमीशन कंप्लीट करो, मत लेना, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा सही में वो सब जितना दिखा रहा है वो सब कुछ यूज़ का नहीं किया। Spawn Fury. Mission accepted. मैंने आज एक, अच्छा मैंने बीबी पूरा ख़त्म करके बाई किया था, कुछ फ़ायदा नहीं। अब गिव अवे कब कर रहे हो? 3K हो जाएंगे उसके बाद स्टार्ट होगा गिव अवे। मेन फोकस प्रीमोस पे, प्रीमो जेम्स। हाँ, अभी नया कैरेक्टर आने वाला है ना मेरा, तो भाई बहुत कम है पीटी। अभी देखो क्या होता है। The wind rises.
कोई भी आया। देखो मन तो था रेडन खाने के, रेडन निकली ही नहीं तो नेक्स्ट जो भी आए। अभी तो कुछ फ्री कैरेक्टर भी मिलने वाले हैं ना इस नए वाले में अपडेट में। अभी एक और विंग 3 लेना है, 3 हो जाएंगे सिर्फ जोंगली के लिए। ले लो भाई ले लो। अभी तो गिव अवे स्टार्ट होने में बहुत टाइम है। अभी तो 50-50 है, मेरा लक कैसा है मालूम है, इसलिए रिस्क नहीं लेना। जोंगली कब आने वाला है? There's no such thing as pure freedom in this world. हाँ न्यू फोर्स कैरेक्टर मिलेगा यो फ्री में। याओ याओ You're so याओ happy याओ just to see मिलेगा। the sun again. How childish. Let's light it up! Lightning, terrified! हो गया भाई का मिशन कंप्लीट। टी में पता नहीं कब आएगा जोंगली। जोंगली बहुत मस्त कैरेक्टर गया, मज़ा आता है उसके साथ खेलने में। Quit following me. Quit डी लुक following चाहिए, me. डी लुक। थ्री 3.5 बोल रहे हैं। Behold. 3.5 बोल रहे हैं, पिछली बार भी नहीं ले पाए थे 50-50। हार गया। अच्छा जोंगली नहीं आएगा कभी भी फ्री में। नहीं फ्री में नहीं, मतलब इसमें Unsightly insects. Squall of fury. Too slow. ना दिया। 5 स्टार फ्री को देगा। हाँ वही ना, 3.5 अपडेट में आएगा वो। अच्छा। Dissipate! डेली कमीशन हो गया, अब इससे क्या करवाएं हेल्प अपना। अब हम चलते हैं वर्ल्ड क्वेस्ट में। वर्ल्ड क्वेस्ट में मेरा हेल्प करेगा ये। Relax. क्या क्या कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। डुअल इविक्शन, तो डुअल इविक्शन किधर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कुछ पता नहीं, बेकार ही है भाई। आड़कन, स्टोरी क्वेस्ट, कमीशन क्वेस्ट, वर्ल्ड क्वेस्ट। चलो वर्ल्ड क्वेस्ट। यहाँ कहीं तो दिखा रहा है जाने के लिए, किधर किधर दिखा रहा है भाई। डिलीट करो साले को। अरे यार ये वो सीखने वाला है क्या, लर्न। हट, ये नहीं करना भाई, इसको हटाओ। डुअल इविक्शन ये पता नहीं किधर ही हो रहा है। ट्रेजर फाउंड ये कर ही नहीं सकते, तो बेसिकली कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। रूम ये सब भी नहीं कर सकते। तुमने इनिजुमा की फाइट करी Just let जो me know if फर्स्ट you ever तुमने find देखी yourself in थी a मेरे pinch. चैनल I पर। can नहीं help you इनिजुमा out. भी अनलॉक कहाँ हुआ है, अभी करना है। कल ही परसों तो मैंने चाइल्ड को हराया है, अभी उसका क्वेस्ट बाकी ही है। उसका क्वेस्ट करने के लिए पहले कुछ और क्वेस्ट करना होगा। ये देखो आर्कन क्वेस्ट किधर गया, ये देखो। इसको करने के लिए पहले कुछ और क्वेस्ट करना होगा, अब जा करके ये होगा। वीकली बॉस मार दिया, वीकली बॉस को भी मार दिया है। अरे तुम लोगों ने अभी तक स्ट्रीम नहीं लाइक करा यार। डेविल अनिकेत लाइक कर दो फटाफट, बुरा बनी। चाइल्ड को मार दिया था। चाइल्ड को एक ही बार मार सकते हैं ना, फिर भी मार सकते हैं क्या? रुको तो 1 मिनट, दोबारा। अच्छा यहाँ चाइल्ड का आ गया।
There's no... नहीं तुमने कोऑप मोड से हटा नहीं 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 कोऑप मोड तो अभी दिखा रहा है ना You wanna कोऑप use मोड my hat जब as नहीं an था तब भी मैंने करा था ट्राई The audacity to even Okay. make that request. How irritating. कुछ और सेकेंडरी क्वेस्ट कुछ करना है तो उसके बाद फिर वो मेन आर्कन क्वेस्ट कर सकते हैं ऐसा बोल रहा है मेरे ही एक लाइक It's दिख quite रहा hard है to ना come by. Well, कोई लाइक नहीं कर रहा भाई amuse तुम me. लोग चलते नहीं लाइक Surrender is करो a valid option. दिखेगा I promise I'll be gentle. Not bad, not You're bad. dead. Guess I should take you more seriously. चाइल्ड ऑफ वीकली बॉस है तुम्हारा करो करो चलो कर लेते हैं रीजन तो है नहीं मेरे पास फिर भी कर लेते हैं जी हाँ ये क्या हुआ अच्छा सीधे यहाँ आ गया Too slow. अब एनिमेशन ही दिखाता है ऊपर से ये देखो ऊपर ऐसे गिरा हुआ है भाई देख रहे हो कितना मोड़ा है मोड़ा बहुत सारा मोड़ा The wind rises. आर्कन क्वेस्ट को मेन स्ट्रीम पर किया करो वर्ल्ड क्वेस्ट को हाँ मेन स्ट्रीम पे रखा है आर्कन क्वेस्ट दिखा किया How amusing. Wretched vermin. You're a cut. ले क्या 60 यूज कर ले क्या Our bond is strong. 40 में लग जाएगा 20 में चलो कर लेते हैं ओ भाई ये एनर्जी रिचार्ज एचपी 6 यार बेकार है हाइड्रो डैमेज ची गंदा चीज मिल गया क्रिट डैमेज ये देगा लेकिन डिफेंस वाला है बेकार है एचपी बेकार है अटैक बेकार है ये भी बेकार ही है भाई कुछ भी अच्छा नहीं मिला नहीं मत करो क्या नहीं करना था मैं डरा दिए अब तो कर दिए As an umbrella? The audacity to 35 even make बचा है that ना request. तो 30 में इसको मार सकते हैं क्या रिमेनिंग 1 अटेम्प्ट अरे चलो इसको मारते हैं 30 में आ जाओ साले वुल्फ को मारते हैं एयर 45 के बाद से यूज करना रीजन ठीक You're है so happy just to see अभी the मेरा sun कितना again. हो गया है How 43 childish. हो गया शायद नहीं 2 है 42 है कर लेंगे फटाफट Squall Fury. चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई अच्छा उधर जाना है मैं इधर उल्टा ही जा रहा भाई वुल्फ को मारना है फ्रेजल रीजन को कलेक्ट कर लो तब तक हाँ अरे वो कभी एक दो यूज़ कर लेता हूँ जैसे अभी देखो चाइल्ड को मैंने मारा ना तो मन करा था लेने का अच्छा ये दो आर्टिफैक्ट निकल गया 5 The स्टार wind rises. भले ही वो कोई काम का नहीं है लेकिन हाँ निकल गया कोई अगर हाइड्रो का ऐसा मिलेगा कैरेक्टर इसमें यूज़ कर सकते हो फ्रेजा रीजन को कलेक्ट Squall and Fury. बूम चलो फुल स्पीड में चलो हाँ स्टार्ट नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं भाई क्यों नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं आ जाए बस वो जल्दी से मैं तुम्हारा 5 स्टार आर्टिफैक्ट यूज़ करने हैं 4 स्टार बस 4 मेन तुम्हें 5 स्टार आर्टिफैक्ट यूज़ करना है 4 स्टार बस काम चलाने के लिए
होते हैं आर्टिफैक्ट। हाँ मेन वही, अभी बस अभी देखो आर्टिफैक्ट मैंने ज़्यादा अपग्रेड करा भी नहीं है किसी को, 5 स्टार को ही थोड़ा मोड़ा कर दिया है, 3 स्टार 2 स्टार तो तक लगाए भी नहीं थे, Adventure time. 5 स्टार जो निकला उसको थोड़ा मोड़ा किया अपग्रेड, और मेन 5 स्टार तो मिल जाए अच्छा, उसके बाद बूम बूम करते हैं, क्या दिक्कत है। Adventure teamwork is dreamwork. देखते रहो भाई, देखते रहो। बढ़िया, हमें इंतजार करें जल्दी से, मेरा 45 हो यार, बूम बम करना है। चलो खत्म भाई खत्म। अरे वीकली ट्रेजर लिमिट रेज्ड, कलेक्ट ही नहीं कर सकते, वाह कलेक्ट ही नहीं कर सकते भाई, ये क्या बात हुआ। तो भाई स्टार्ट ही नहीं करने दो ना, जब कलेक्ट नहीं कर सकते तो स्टार्ट क्यों करने देते हो भाई, ये क्या बात हुआ। अच्छी छी यार, Our bond is strong. ये अच्छा बात नहीं है, ये धोखा हुआ भाई मेरे साथ। ये सब 40 ले रहा है, कोई 30 वाला नहीं है क्या, There's no need to exchange pleasantries. कोई 30 It's 20 rather वाला नहीं है pathetic to force a क्या। conversation just to occupy चाइल्ड silence. कितना लिया था भाई, ये भी एक ही है, ये भी 30 ही लिया था यार। बादल पर जा सकते हैं, लेकिन बादल का कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। 36 एक आने में कितना देर लगता है, 5 मिनट लग जाता है एक आने में। तो अब क्या किया जाए, चाइल्ड भी नहीं मार सकते, डॉक्यूमेंट्स में चला जाए क्या। डॉक्यूमेंट्स वेपन वाले नहीं, टैलेंट वाले पे आओ। You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. चलो If someone can't handle it, टैलेंट वाले पे। अरे ये क्या हो रहा है। ओ भाई ही हू। quit following me. Too slow. Quit following me. Take cover! That's gonna hurt in the morning. Our bond is strong. Everybody stand back. The Temple of Wisdom! Let's light it up. Out of my way.
एक और करते हैं अच्छा सा। इस बार एक आर्टिफैक्ट का डोमेन करेंगे। Dissipate! Benny's adventure team, assemble! Our bond is strong. Oh. 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 Or not. Flower of Paradise. Oh, ow! Where did that come from? Dissipate! Squall and Fury. Unsightly insects. Stay with me! Teamwork is dreamwork! Behold. Surely not. Bond is strong! Stop this thing! Everybody Make stand yourselves a back! move! Let's light it up! Squall and Fury. Roll. कुछ भी अच्छा नहीं निकला यार, एक 5 स्टार तक नहीं निकला। Quit following me.
There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Relax. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy some. La da 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 da. Behold, the Prinzessin der Althlon. I have gathered everyone here today to make an important announcement. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project! So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other 2. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find, and in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest answer,
I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year, Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Haha, what a coincidence! I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but, I have some business to do. no. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Really? Ooh, then Paima will ask you about how to run a business! Then we'll never be short of Mora ever again. Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. No, I don't need it. Ah, don't be like that. Hey, come on, don't go! Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. Did you hear that? They said they had some useful information. This location can be involved in the quest. Let's follow them and see what we can find out. Adventure Guild of Fair, please complete. Adventurers Guild of Fairs, please complete it first. बे कौन सा है भाई, पता ही नहीं चल रहा। चलो भाई, तो यही कंप्लीट कर लो पहले। The wind rises.
Too slow. But I don't want to. I can't read what Please, this says. show me your prescription. My, to what do I owe the pleasure? Though I'm afraid that if you're looking for our little Chi-Chi, she's out gathering herbs. And if it isn't Miss Yanfei as well, now that's an even rarer honor. What business brings you here, might I inquire? Some charlatans peddling ineffectual medicines again, no doubt? No. I'm here this time to ask if you're familiar with Smaragdus Jadeite. Smaragdus Jadeite? Why, yes, there is some information about it included in the 6th commentary on the 7 Mountain Treatises. The 7 Mountain Treatises states that this substance springs forth from stone marrow within the mountains, and will bring disaster to any mere mortals who touch it. It is abundant in elemental energy, so if someone without a vision is in contact with it for a prolonged period, best case scenario, they fall ill. Worst case scenario, they'll suffer great changes in personality and their illness will only ever get worse. Anyway, I'm sure you didn't come all this way just to chit-chat. Knowing you, Yanfei, and given the specific nature of your question, I suppose that you're about to ask me to write an official affidavit attesting to the pharmaceutical peculiarities of Smaragdus Jadeite? That is indeed the case. If you would be so kind, Dr. Baiju. No trouble at all. It's just a single document. Won't take me a moment. I would mention, though, that you are not the only one who's developed a curiosity for Smaragdus Jadeite recently. A Snezhnayan merchant came to ask me about it not long ago. But after I gave him my reply, his expression shifted to one of remarkable disappointment. I wonder, Miss Yanfei, if your pressing business might be related to this Snezhnayan merchant? Ah, you needn't concern yourself about that, Dr. Baiju. Thank you for penning us that document. I'll make sure to compensate you in due course. You're too kind. Take care now. That Baiju guy is as weird as ever. Is it just Paimon, or does it feel like he was... Dr. Baiju's always been like that. Well, we have the evidence we need. Too slow. Miss Yanfei, have you finished your investigation? I trust you will now be in a position to assess the compensation due. Yes, my investigation is indeed concluded. I can now provide a final figure for the amount payable. Wonderful. Well then, please, could you do the honors, Miss Yanfei? Of course. According to the stipulations of the contract, Mr. Crossell, you must pay Mr. Chow 10 times the original transaction price in Mora. Sure. Wait, what? Me pay her? Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be Smaragdus Jadeite that was inlaid within the Smaragdus Jadeite twin phoenix pins that you rented out to Mr. Chow was, in fact, Smaragdus Nephrite. Now, the contract states very clearly that 10 times the price shall be paid should the article not be genuine. Accordingly, you are liable for this sum, which is payable to Mr. Chow in Mora. Material evidence? What material evidence? Why, Miss Yanfei, you cannot frame me like this.
I spent a huge sum to obtain that Smaragdus jadeite, and yet you claim that the ore inlaid on the hairpins is somehow fake? I demand to see your evidence. Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Traveler, if we want to determine whether the ore is genuine, we need to start with evidence from the Jade Mystery. Clearly, you still have a few things to learn about this aspect of legal proceedings. This is a processing record from the Jade Mystery, along with stone samples and an affidavit signed by the business owner, Chateau. Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus jadeite and Smaragdus nephrite. How does this prove anything? In any case, Smaragdus nephrite is the outer layer of Smaragdus jadeite. So I had him cut away the nephrite, he returned the valuable jadeite core to me, and some nephrite samples remain in the store. What am I missing exactly? That's an unsubstantiated belief. Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. And we are here to talk about evidence, aren't we? Ugh. Looks like our first piece of evidence didn't convince him at all. Seems like he came prepared. What should we do next? Hard evidence? Something legally binding? Oh, come on. I meant the backup copy of the document. Oh, come on. I meant the backup copy of the document from the Ministry of Civil Affairs. This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the Ministry's seal, after all. लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए पहले स्टार्टिंग से वही दिखाना चाह रहा था लेकिन वो ले ही नहीं रहा Our second piece of evidence didn't work either. And this guy's getting more belligerent by the second. You know, you could be right. Perhaps the hairpins are the real deal after all. Of course I'm right. All the evidence shown supports my story. Well, hang on a moment now, because I do recall one final piece of evidence that we haven't revealed yet. Traveler, would you do the honors? What's this? Smaragdus jadeite springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. Sustained contact with Smaragdus jadeite over a prolonged period will, in less serious cases, cause a mild malady, while in serious cases, the patient may suffer a dramatic change of personality and fall seriously ill. Mr. Crossell, were you aware of these peculiar properties of Smaragdus jadeite? I had no idea. No idea, you say? I'd guessed as much. But for you to have rented out such a dangerous item, I'm afraid that this falls outside the scope of my work, but within that of the Ministry of Civil Affairs. However, I'm sure that the Ministry will be relatively lenient considering that, as you say, you were ignorant of the danger you posed. Don't worry, Mr. Crossell. I will make sure that all the evidence presented here will be handed over to the Ministry. I trust that you'll give them your full cooperation in their investigations. What? Wait! I knew. Oh, so you knew? Oh, dear Mr. Crossell. But if you knew of Smaragdus jadeite's dangerous properties beforehand, why would you... Huh? No, The hairpins aren't actually inlaid with genuine Smaragdus jadeite? Is that what you were about to say? You do understand, Mr. Crossell, that this means that you will have to pay Ms. Chow 10 times the original price in Mora? Mr. Crossell, your answer, please. My client and I are waiting. Yep, he's seriously intimidating right now. It's like she's a different person. I admit it. I confess. The ore I had inlaid on those hairpins was Smaragdus nephrite. But I'm a victim in all of this too. I invested a great deal of time and money into acquiring that small amount of Smaragdus jadeite, in the hopes of turning it into a piece of jewelry that would fetch a fine price. But after receiving it and carrying it around for a few days, I started to feel extreme discomfort. I couldn't sleep a wink or eat a single bite. I was in a constant state of agitation too. I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out, only to discover that this sort of stone cannot be worn as jewelry. But how could I let all that money go to waste?
That's why I had another pair of hairpins made from smaragdus nephrite, which is almost indistinguishable from smaragdus jadeite. I kept the real smaragdus jadeite in a specially made box. I daren't touch it again. I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then to top it all off, Zhiqiao lost the hairpins after I rented them out to her. Exactly! If they weren't the real deal, why'd you make her pay so much? I didn't want to either, but when I purchased that smaragdus jadeite, some of my business partners found out. I knew they'd be watching closely to see how much I could make off it. If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then my days in this line of business would be over. All right, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client. According to the contract, you must pay Mr. Chow 10 times the original price in Mora, and that is final. 10 times? Kroso looks like he could faint any second. As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% of that sum will go to me. 20%? That's as much as I spent on that smaragdus jadeite. There's no need. It's fine. You don't have to pay me that much, Mora. Even if the smaragdus jadeite on those hairpins was fake, I still bear responsibility for losing them. Legally or not, I think I owe some compensation for that. Ms. Zhiqiao, you... However, Mr. Crossell, since you have no use for that chunk of smaragdus jadeite, why don't you give it to me instead? I'll consider us even. What? But all right then. This cursed rock's brought me enough grief as it is. Miss Yunfei, I'll turn this smaragdus jadeite over to you. I trust that it will suffice as remuneration? Well, that's not quite how the rules say this should go, but whatever. It'll do. Thanks so much for your help this time, Miss Yunfei. When you have the time, I'll be sure to visit and express my thanks more appropriately. Oh, come on. No need to stand on ceremony. Now, if I may confirm this again, Mr. Chow, have you and Mr. Crossell come to an understanding? Well, yes, I believe we have. Well then, that's good. Mr. Crossell, it seems that my client has no further claims against you. Is that so? That's good. That's good. Actually, Mr. Crossell, I'd like to talk business for a second if I may. I could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. My family, on the other hand, works in the ore business, and we have a fair stock of fine ores. If we could join forces, your jewelry designs and our choice ores, I think we could do some fine business between us. Let me think for a moment. Well, that's that. And we've got the smaragdus jadeite that Granny wants too. All's well that ends well, eh? Exactly. Usually when someone tells us they've lost something, we end up searching all over the place for it. But this time, you managed to solve the problem with just a big stack of documents. Even though the solution didn't involve actually finding the hairpins. The right solution depends on your perspective on the problem. The objective of my client, Mr. Chow, was to reduce her liability to pay compensation. So, rather than looking high and low for some hairpins, proving that the rented item was nowhere near worth what the vendor had claimed it to be was the more efficient solution. An Adeptus. Speaking of, you took part in that battle, didn't you? In which case, you would have heard what Granny said. Liyue Harbor is now a city ruled by humans. The title of Adeptus means precious little to me compared to my job as a legal advisor. In any case, don't you think that the Liyue Harbor of today needs legal consultancy far more than it needs adeptal powers? Paimon can think of someone who would definitely disagree with your reasoning. Well, since we got what we came for, it's time to pay Granny a visit. I bet she's been on tenterhooks for a while now. My friend. Squall and Fury!
returned. How did it go? Were you able to... Good, good. Then we have all the materials we need. Well, if we're all set, Granny, I'll get going now. Got a ton of clients waiting for me back at the office. Oh, you. All right, then. Go see to your business. Granny should be able to handle the rest. I'm off then. Bye! Oh yes, Traveler. Make sure you don't lose the business card I gave you. I've been looking into the laws of other nations as well. If you should ever bump into any trouble with the law, come find me directly. Regulars get discounts too. Come now, child. Are you leaving or are you not? If you have no wish to leave, perhaps you'd like to help me clean my teapot, hmm? I'm leaving! I'm leaving! That child. Goodness knows where she learned to be so rambunctious. Her father was hardly so riotous or fond of talking nonsense back in the day when he stood... Indeed she is. Liyue has changed, and the Adepti must also learn to change. Yanfei might be overly garrulous, but she is also the most intimately acquainted with the city among us all. Liyue is not the same place I once knew. All right, then. Let us speak of this no more. Back on topic. I believe that I still owe you a little gift. Ooh, Paimon's so excited! How is it made? It is but a single teapot. It shan't take long at all. Just wait here for a moment. There we go. This Serenity pot is all yours now. Hold it firmly. If you were to drop it, oh goodness, who knows what might happen. Take these blueprints with you as well. You'll need them if you wish to make your teapot a little more lively inside. Wait a minute, Granny! How exactly are we supposed to use this teapot? Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a certain little helper to await you within this teapot. She will explain everything you need to know about it. There's no such thing as pure freedom in this world. Wow! This teapot seems even bigger inside than Madame Ping's! There's even a great big house in the middle, too! Huh. But there's just a whole load of nothing around it. Paimon can't do that! Well, you're the one with the sword anyway. You do it! Still, why is it so empty here apart from that house? Oh, wait a second. What is that? Well, it seems that we have a visitor. It's a huge finch! Excuse me, I am not a finch. I am a teapot spirit, and you may call me... hang on a moment. What am I supposed to be called again? Oh, call me. I suppose you may call me Tubby. So you're the little helper Madame Ping mentioned? Madam Ping?
Oh, you must mean Ping. Yes, she did summon me here. She told me much about you. You may leave all matters regarding the upkeep of this realm to me. Your journey may be far from over, but at least this way you will not want for a comfortable place to sleep each night. Though it is the Adepti who create realms such as this, they generally do not have the time of day to attend to the banal matter of their maintenance. Thus, we teapot spirits were created to help guard their realms and manage their affairs. You may consider me a butler, if you will. Now, allow me to explain this realm to you. Have you any blueprints on you? Specifically, blueprints with beautiful rooms, chairs, and the like. As long as you have a blueprint, you can refashion this realm however you please. Blueprints? Oh, that's right! Granny handed us some when she gave us the teapot, didn't she? Let's take them out and have a look. Yes, these are the blueprints I'm talking about. Go on, open them up. Just commit the image of the objects to memory and prepare the necessary materials. Then simply release the thought from your mind and the object in the blueprint shall appear within this teapot. Wow! Is that all it takes? Then we could build a whole city. I doubt it. He said this world is a golden... I hardly remember myself. What's more, well, let's know if there's a... Relax. The one before you. Ah.
following me. Squall and Fury. Too slow. Relax. Quit following me. Maybe you're... If you ever have any... Maybe you're not... If you ever have any... Behold! The wind rises.
Too slow. Squall and fury. Hello. Is there some matter? This is a comfortable, much like the days in the Jade Chamber. Oh, an environment I sense that, or to put it another way. The wind rises. Too slow. The one before you. To gain that. Too slow. Squall and fury. Ad Astra. Thank you for Ad Astra.
Fishing, bhai, fishing. The wind rises. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation. Steady now, it's the final stretch. Whew, that was a tough fight. Victory is almost ours! Wow, Paimon's stomach is rumbling already!
stomach is rumbling already! You've got it! You got it! Well, you couldn't have done it without Paimon! Swan Fury! Everything's ready. The pitch-black whale inhabiting the outer sea depths. Oh, what an excellent...
The wind rises. Oz, reveal thyself! Out of the frying pan, into the fire! Squall and fury. Why do they never miss? Let's light it up! Cry louder! Too slow. Behold! स्पार्क हेलो 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 स्पार्क भाई, क्या हाल चाल? ब्रो रीड चैट कर लिया भाई। और स्पार्क ब्रो बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? स्पार्क भाई क्या हाल चाल है बताओ? Squall and fury. The wind rises. ब्रो 1.6 के वेयर आर मॉड्स? ब्रो कोई मतलब वाचिंग ही नहीं है ना, कोई आता ही नहीं देखने, तो मॉड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे।
पहले आती थी ना 10-15 वॉचिंग रहती थी, कम से कम 6-7 वॉचिंग रहती थी, तब मॉड्स की ज़रूरत पड़ती थी। अभी तो मॉड्स खुद ही नहीं आ रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। जब ऐसा फिर वॉचिंग आने लगेगा तब फिर मॉड्स का देखा जाएगा। ग्राफिक्स में मोशन ब्लर ऑफ, मोशन ब्लर है तभी थोड़ा लैग कम दिख रहा है तुमको। मोशन ब्लर ऑन कर दूंगा ना मैं तो और भी ज़्यादा लैग दिखेगा तुम्हें, इसलिए मैं अभी मोशन ब्लर ऑफ नहीं कर रहा। कैथरीन Quit following me. ऐसा ऐसा कर रहा हूँ ना तो लैग नहीं दिख रहा ना, मोशन ब्लर आ जा रहा है। ऐसा मैं ये हटा दूंगा ना तो मोशन ब्लर मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, जानते हो। मैं अभी थोड़ा देर पहले देखो, अभी मैंने सेटिंग करा थोड़ा देर पहले, स्टार्टिंग से देखना मोशन ब्लर ये सब नहीं था, लेकिन नहीं है। ग्राफिक्स तो में सी देखो ग्राफिक्स। मेरा मतलब जीपीयू नहीं है ना, बस डुअल कोर सीपीयू है एक, उसी पे सब चलता है। ये देखो, और ये मैं विंडोड में खेल रहा हूँ, मतलब 720p विंडोड स्क्रीन करके, छोटा सा दिखता है, एकदम छोटा सा। तब जा करके गेम चलता भी है। Maybe that's their problem. अभी कितना 20-10 ऐसा दे रहा होगा। FPS 30 कर लो, ब्लर टर्न ऑफ। अच्छा, ग्राफिक्स इसको कर लेते हैं 30, मोशन ब्लर को करते हैं ऑफ। चलो, जैसा तुमने बोला वैसा मैंने कर दिया। इधर से काफी क्वेस्ट मिलने वाले हैं, सभी के क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। नाउ गुड, चलो सही है, तुम बोलते हो तो मान लेता हूँ। जेंशन कब शुरू किया आपने? 1 महीना हुआ है शायद, हाँ 1 महीना हुआ है। खेलता तो मैं पहले भी था, लेकिन ऐसा कुछ सीरियस नहीं, बस ऐसे गेम खोला बंद कर दिया, बस समझ नहीं आता था। इधर 1 महीने से थोड़ा मतलब अच्छे से गेम समझ के खेलना स्टार्ट करा है ना। हाँ, इसके पहले माइनक्राफ्ट चलता था, माइनक्राफ्ट का पहले स्टम्बल गाइज और अमंग अस ये सब चलता था। माइनक्राफ्ट में वॉचिंग आती थी पहले, लेकिन अब SMP ये सब जब मैं खेलता था फिर वो भी बंद हो गया, तो फिर गेम भी बंद कर दिया। बढ़िया, कोई फेवरेट कैरेक्टर? अभी फिलहाल तो यही चल रहा है मेरा, वॉन्डरर ही है, उड़ता है ना इसीलिए। और ऐसे लुक्स वाइज के हिसाब से चाहिए तो फिर लीसा और निंगवांग है, यही सब है फेवरेट।
वर्ल्ड क्वेस्ट करो सभी पहले ब्रो। हाँ वर्ल्ड क्वेस्ट तो मतलब ऑफ स्ट्रीम भी कर सकता हूँ ना मैं। Look at that, ma'am. अभी स्ट्रीम पे तो मैं सोच रहा हूँ ये Nowhere left to आर्कन run. क्वेस्ट Don't कर worry, लिया जाए। we're not bad guys. You give us some more. अभी We दो give तीन you a वर्ल्ड little क्वेस्ट करा info. मैंने क्योंकि वो Everybody's a बोल winner. रहा था कि वो करना Boss, I got a bad feeling इम्पोर्टेंट है, about उसके this. बाद ही Look at आर्कन the क्वेस्ट white कर hair, पाओगे। the energy she तो gives करा off. मैंने। I'm telling you, there's अभी something आ गया आर्कन क्वेस्ट में। different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you, I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. ब्रो एनर्जी लगा तेरा वॉइस में। अरे रे रे रुक जाओ। No more इसी का excuses. वॉइस ना कुछ ज़्यादा तेज हो गया इसलिए मेरा वॉइस कम लग रहा है। Yeah, I saw you strolling into Leo अब ठीक है ना, वॉइस आ रहा है ना ordering अच्छे a से। table full of food and only taking a few bites. Then she गेम का kiosk, then साउंड one-meat थोड़ा restaurant. ज़्यादा करती है तो मैंने Same स्टोरी story चल रहा था ना each time. इसीलिए। You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. The Millilith. What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Silence! How dare you threaten innocent और बता civilians? स्पार्क, तुमको मेरा चैनल You're coming मतलब with us. कैसे मिला? कहीं खोजने पे मिला या ऐसे ही आ गया Don't तुम्हारे be angry, फीड पे? sir. Please, let me explain. Shenhe. Shenhe? सर्च। My name. अच्छा क्या सर्च कर रहे थे? जेंशिन इम्पैक्ट लाइव तो मिल गया। Your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. You can't do that. That's way too violent. This is Liyue Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? No, apparently not. Really? So how exactly have you... That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big medicinal meal. After all, you can't work on an empty stomach. Psst. Do you think Shenhe might be an adeptus? It seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to get how things work here. If she is an adeptus, that would explain everything. Where does she fit in with the other ब्लूम adepti, though? ऐसा लगता है। Paimon's super curious. हाँ ओके ब्रो,
कहाँ से हो आप? मैं तो बिहार से हूँ। अब मेरा एंड करने का टाइम हो गया। कल से यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं, है ना? मज़ा आएगा। स्पार्क ब्रो सब्सक्राइब करके रख लो, कल मैं आता हूँ, स्टोरी स्टार्ट करा जाएगा। हेल्प वेल्प भी कर देना कुछ, ठीक है? हम भी बिहार से। अरे सही है भाई, फिर क्या दिक्कत है। चलो सब्सक्राइब कर लीजिए बात पे। आना अब कल जब स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे तब आ जाना। बूम बूम करते हैं कल। अभी करते हैं एंड, ठीक है? लाइक वाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन सब दबा के रख लो। मिलते हैं कल। हाँ चलो गाइज, थैंक यू सो मच अभी तक यहाँ तक बने रहने के लिए सभी को। मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच स्पार्क भाई आने के लिए। चलो बाय।